Hello everybody. Today's topic for class 11 science English medium in subject physics, chapter number 5, laws of motion, is law of conservation of momentum. Okay. So आज हम law of conservation of momentum के बारे में स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है. तो अगर कोई सिस्टम है ना, if there is a system right, on which no external force is acting, so its जो linear momentum is conserved. Okay, so कोई भी सिस्टम है, हाँ, तो उस पे अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगा रहे, हाँ, तो उसका जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व है. ओके, सो दिस इज द स्टेटमेंट फॉर this law of conservation of momentum. According to law of conservation of momentum, if no external force is acting on the system, the total linear momentum of the system is conserved. Okay, so यहाँ पर हम two particle system के लिए law of conservation of momentum को prove करेंगे. Okay, we'll be proving it for two particle system. दो particle का system है, उसके लिए हम ये प्रूव करेंगे. ओके, सो हम एक टू पार्टिकल सिस्टम को कंसीडर करते हैं. ओके, वी आर कंसीडरिंग अ टू पार्टिकल सिस्टम ऑन व्हिच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग. ओके, बट the particles of the system, two particle system, the particle of the systems are exerting a force on each other. Okay, due to mutual interaction. Okay, तो बाहर से इन दो पार्टिकल सिस्टम पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है, बट म्यूचुअल इंटरेक्शन के कारण ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे पर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं. ओके, सो लेट F21 इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन सेकंड पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल. जो F21 है, ओके, F21 क्या है, सेकंड पार्टिकल पे फर्स्ट पार्टिकल द्वारा एक्सर्टेड फोर्स है. एंड व्हाट इज F एंड F12 क्या है, फर्स्ट पार्टिकल पर सेकेंड पार्टिकल द्वारा जो एक्सर्टेड फोर्स है. ओके, सो दिस आर द फोर्सेस, टू फोर्सेस. फर्स्ट वन इज एक्टिंग सपोज ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू सेकेंड पार्टिकल. ओके, सेकेंड फोर्स इज एक्टिंग ऑन सेकेंड पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल. ओके, सो नाउ इफ द फोर्सेस इज एक्टिंग ऑन these two particles, okay, its momentum will be changed. Okay, so the change in momentum of first particle be delta p1 and second particle be delta p2. Okay, due to the force exerted by second particle, there is a change in momentum of the first particle that we have taken as p1. Okay, and due to the force of first particle on the second particle, there is a change in momentum of the second particle that we have taken as p2. Okay, these are the change in momentum of the particle. Okay, now we know that from second law ki rate of change of momentum is directly proportional to the force applied. Okay, so जो F12 है, that is force acting on first particle due to second particle, is equals to change in momentum of the first particle upon time taken. Okay, so delta p1 is the change in momentum of the first particle and delta t is time taken. Similarly, F21, that is force exerted on second particle due to first particle, due to which there is change in momentum of second particle. So F21 will be equals to delta p2, that is change in momentum of second particle upon delta t. Okay, now we know that from Newton's third law, okay, the force acting on the first particle due to second particle is equals to force acting on second particle due to first particle. For every action there is equal and opposite reaction, and action and reaction take place on different bodies. Okay, this is the third law. So we'll equate these two forces from Newton's third law of motion. Okay, so we get
F12 equals to, substituting the value, we get delta P1 upon delta T equals to minus. Okay, I told you action and reaction. Okay, acts on different objects, right? Reverse, opposite direction. That's why negative side. Okay, इसको हम ट्रांसपोज कर लेते हैं. Okay, we get delta P1 upon delta T plus delta P2 upon delta T equals to 0. We get delta P1 plus delta P2 equals to 0. Okay, or we can take delta common P1 plus P2. That is change in momentum. That is change in momentum of the system is 0. So P1 plus P2 equals to constant. That is momentum of the system is constant. Okay, which means total linear momentum of the system before interaction is equals to total linear momentum after interaction. Before interaction or after interaction, linear momentum क्या है? Constant है. Which means system का जो linear momentum है वो conserve है. यही हमको prove करना है. That is, if no force is acting, है ना, on a system, no external force is acting on a system, then its linear momentum is conserved.